So as we discussed previously, we have a cell cycle which contains the M phase, the interphase which contains G1, S1 and G2, and then we have the cytokinesis phase as well. Today we'll start off with mitosis. Last time हमने discuss कर लिया था कि what happens in G1 phase, what happens in S phase, what happens in G2 phase. S phase हम डिटेल में आपके पास chapter 6 in nucleic acids के अंदर भी देखेंगे. The process of mitosis is best described by annotated diagrams as shown in figure 5.6, although in reality the process is continuous and usually divided into four main stages for convenience, like four snapshots from a film. The four stages are called prophase, metaphase, anaphase, and telophase. These are the four stages of mitosis that we're going to study. Now, most nuclei contain many chromosomes, but the diagrams in 5.6 show a cell containing only 4 chromosomes. क्योंकि अभी हम सिर्फ 4 chromosomes को discuss करके we are going to study the whole stages of mitosis, and the colors are also used to show whether the chromosomes are the female or the male ones. तो हमने red वाले को suppose करे they are the male chromosome और blue वाले आपके पास female chromosome. An animal cell is an example over here that you can see that not that during the late prophase the nucleic envelope disappears. अर्ली प्रोफेज उसकी एक नॉर्मल स्टेज है, अभी ऐसा दिख रहा है. ठीक है, इधर क्या होगा अर्ली प्रोफेज के अंदर, द टू सेंट्रोसोम्स प्रोड्यूस बाय द रेप्लिकेशन ऑफ द ओरिजिनल सेंट्रोसोम ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. जब आपका डीएनए रेप्लिकेट हुआ था ना एस फेज के अंदर, व्हेन योर डीएनए रेप्लिकेटेड इन योर एस फेज, that was the moment where the centrosome also replicated as well. This is also unique thing कि आपके पास centrosome also replicated. What is the function of centrosome? Centrosome हमने जैसे आपने record lectures में देखे MTOCs में, centrosome में से आपके पास spindle fibers निकलती हैं which are going to pull the chromosomes towards the different poles of the cell. अब जब डीएनए रेप्लिकेशन हुई थी ना इस फेज में, उधर ही डीएनए रेप्लिकेट होने के साथ साथ एक और चीज हुई कि आपके पास सेंट्रोसोम्स भी रेप्लिकेट हो गए, और एक उधर जाने की तैयारी पकड़ है और एक उधर जाने की तैयारी पकड़ है. एंड अभी तक वी कैन सी दैट द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच इज द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज स्टिल इंटैक्ट. अभी तक वो डिसइंटीग्रेट या बिल्कुल डिसिपेट नहीं हुई है. An animal cell is used as an example, and note that during late prophase, the nuclear envelope disappears. In fact, it breaks up into small vesicles which cannot be seen with a light microscope. Late prophase में जाके the nuclear envelope finally disappears, breaks into vesicles which are not even visible by a light microscope. Maybe they might be visible with an, अगर हम उसको देखें from an electron microscope as well. And second चीज जो होती है, पहली चीज nuclear envelope disappears, and the second nucleolus also disappears as well. साथ ही साथ तीसरी चीज जो आपके पास होती है, द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन इन क्रोमैटेड फॉर्म. अब वो क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं क्लियरली कि इसमें एक क्रोमैटेड है और दूसरा क्रोमैटेड है, इसमें भी एक क्रोमैटेड है दूसरा क्रोमैटेड है, इस क्रोमोसोम के अंदर भी यू कैन सी दिस इज वन क्रोमैटेड, दिस इज टू क्रोमैटेड. काफी क्लियरली अंदाजा पता लग रहा है अब देख के. पहले तो बहुत ज्यादा दे वर लाइक इन अ कॉइल्ड फॉर्म. नाउ दे आर इन अ वेरी हीट्रोलिटिकल फॉर्म, जिसको हम आगे जाके इनहेरिटेंस से पढ़ेंगे. इस फॉर्म को हीट्रोजीनियस फॉर्म भी कहते हैं. सो heterochromatin, yes, heterochromatin की फॉर्म कहते हैं, which you are going to study in A2. क्योंकि अब अच्छा खासा विजिबल हो रहा है कि ठीक है, पहले in early prophase the chromosomes were loosely coiled, but during the late prophase पता लग रहा है कि ठीक है, chromosome contains one chromatid and a second chromatid as well. तो ये तीन चीजें you have to remember that happens in prophase. As a result, diagrams of metaphase and anaphase also do not show the nuclear envelope. इसी तरह जब nuclear envelope गायब हो चुके लेट प्रोफेज में, ना वो मेटाफेज में है ना एनाफेज के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों में you cannot see the nuclear envelope. And at the end of the telophase, after the nucleus has divided, ये कंस्ट्रक्शन होनी शुरू होती है साइटोप्लाज्म की. यहाँ से कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ से कंस्ट्रक्शन होगी, बिकॉज व्हाट हैपेंड इन मेटाफेज, जो दो सेंट्रोसोम आपके पास रेप्लिकेट हुए थे ना, एक आपके पास चला गया था नॉर्थ साइड पे ऑफ द सेल और एक आपके पास दूसरे पोल साउथ साइड पे चला गया था सेल के. वहां से अराइज हुई थी आपके पास स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, दीज स्पिंडल फाइबर्स अराइज्ड व्हिच यू शुड नो दैट आर एक्चुअली मेड ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलेन्स, और वो डिफरेंट, हमने वो सारी डिटेल्स चैप्टर 1 के अंदर कवर की हुई है. Now, each centrosome on north and south pole helps to organize the production of spindle microtubules. These spindle fibers are made up of microtubules, और microtubules आपको पता है कि अल्फा ब्यूटाइल ट्यूबुलेंट से बने होते हैं डिफरेंट, और 13 मिलके आपके पास एक बनाते हैं. Chromosomes line up across the equator of the spindle and they are attached by the centromeres to the spindle. Metaphase की निशानी ये कि all of the chromatids you can see over here, the chromosomes have lined up on the equator. और एनाफेज में जाके
half of them are going to move up and half of them are going to move to the other pole when they are pulled by the microtubules. लेकिन जब फिर जो आखिरी फेज होता है आपके पास टीलोफेज, यहाँ पे अगर हम सिर्फ एनिमल सेल के हिसाब से बात करें, because telophase, remember, is different for animal cells and it is different for plant cells. When we talk in terms of animal cells, there's going to be a constriction of cytoplasm, which is a process called cytokinesis. And as the cell changes shape, the surface area of the cell increases as the two new cells form. So the new cell surface membrane has to be made as well. The behavior of chromosomes in a plant cell is identical to that in animal cells. However, plant cells differ in two ways. Number one, they do not have centrosome, पहली बात तो, एंड नंबर थ्री दे डोंट हैव, और उनकी जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है, अ सेल वॉल मस्ट बी फॉर्म्ड एज वेल. वहां पे जो साइटोकाइनेसिस भी है वो भी एक सेल प्लेट की ही मदद से आता है. यहाँ पे कैसे अलग हो रहे हैं दो सेल, एक क्लीवेज फॉर्म हो रहा है. यू कैन सी यहाँ पे एक डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है दोनों तरफ के साइटोप्लाज्म के अंदर से, और फाइनली यहाँ पे आके वो बिल्कुल बंद हो जाएगा. लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर हम आगे देखेंगे दैट एक सेल प्लेट फॉर्म हो जाती है जो आहिस्ता 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 पक्की हो जाती है, और फिर सेल वन और टू, दो समय द प्लांट्स एक्चुअली डिवाइड. सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस टू क्रोमोसोम ड्यूरिंग anaphase as well. अगर आपको पूछा जाए what are the changes to the chromosome structure that happens to anaphase, that you should know. And once the telophase की stages क्या क्या है, nucleus reforms, remains of spindle breakdown, because they have done their job, they have put the chromosomes on both sides of the pole, उनका काम हो गया, आधे क्रोमोसोम ऊपर आधे क्रोमोसोम नीचे ले गए. सेंट्रोसोम विल रेप्लिकेट दोबारा. ठीक है, अभी यहाँ पे दो सेंट्रोसोम थे ना एक सेल के अंदर, एक यहाँ पे और दूसरा दूसरे सेल के पास आपके पास ये है. ठीक है, ठीक है. सो यू कैन सी के वन सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस भी रिफॉर्म हो जाएगा. क्या चीज, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी फॉर्म हो जाएगा. न्यूक्लियस खुद क्या चीज होती है, न्यूक्लियस खुद कुछ नहीं है. न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप. तो हाँ, न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा व्हेन वी से कि न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म हो रहा है और न्यूक्लियोलस आ गया. न्यूक्लियोलस का वापस आना और न्यूक्लियर एनवेलप का दोबारा आना, ये दोनों मिलके ही, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. गॉट इट. डोंट राइट कि और न्यूक्लियस मेटाफेज दोबारा में फॉर्म है. ठीक है, ये ना लिखना कि न्यूक्लियस रिफॉर्म्स है. ठीक है, न्यूक्लियस रिफॉर्म नहीं होता एक्चुअली. उसका पहले न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म होता है, फिर न्यूक्लियोलस रिफॉर्म होता है, और क्रोमोसोम्स तो आपके पास ऑलरेडी अंदर होते हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. मेटाफेज में लेट मेटाफेज होता है. लेट मेटाफेज को डिवाइड कर सकते हैं मेटाफेज और लेट मेटाफेज में, लेकिन वो A2 के अंदर आप चैप्टर 16 में ज्यादा डिटेल पढ़ते हो. अभी AS के अंदर मेटाफेज और लेट मेटाफेज करने की जरूरत नहीं है. बट मेटाफेज जो अर्ली मेटाफेज होता है उसके अंदर यू कैन सी द टू सेंट्रोसोम्स मूविंग टुवर्ड्स द पोल. एंड इन द लेट मेटाफेज, और इस वक्त अर्ली मेटाफेज के अंदर ये इक्वेटर पे लाइन अप नहीं हुए हुए होते. लेट मेटाफेज के अंदर दे आर लाइंड अप एट द इक्वेटर, और सेंट्रोसोम भी अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुके होते हैं. बट दैट डिटेल इज रिक्वायर्ड इन A2. A2 के अंदर हम मेटाफेज वन, मेटाफेज टू, मेटाफेज थ्री, दो तीन टाइप्स पढ़ेंगे एक साथ में. तो इसके अलावा न्यूक्लियस रिफॉर्म्स, स्पिंडल ब्रेक्स डाउन, सेंट्रोसोम जो एक एक दूसरे दोनों दोनों सेल को एक एक मिल गया ना, अब जब इस सेल ने भी आगे रेप्लिकेट करना होगा ना दो में, तो ये वाला सेंट्रोसोम दोबारा कौन से फेज में रेप्लिकेट होगा, एस फेज के अंदर फिर रेप्लिकेट हो जाएगा, ताकि वो दो और आगे सेल बना सके रेप्लिकेट करके. साइटोकिनेसिस जो प्रोसेस है, दैट इज डिफाइंड एज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड सेल इनटू टू बाय द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एजेस ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन. गॉट इट. यस. These are the microscopic diagrams that you should be able to see, और फर्क पता होना चाहिए because these diagrams can come as well. आप प्रोफेज को देखो, you can see the nuclear envelope. प्रोफेज की निशानी क्या होती है, the nuclear envelope is intact. ठीक है, प्रोफेज और मेटाफेज के दरमियान की क्या निशानी होती है, दैट ये रीजन डार्क हो जाता है. क्यों हो रहा है ये रीजन डार्क, कैन यू टेल मी, बिटवीन प्रोफेज एंड मेटाफेज. जब न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन चली जाएगी वो तो चली गई, प्रोफेज लेकिन में. डार्क क्यों हो रही है ये जगह. इक्वेटर में लाइन अप हो रहा है नो, इसलिए, लेकिन वो अभी तो हुआ नहीं है. पहले ना, ये डार्क इसलिए हुआ, अभी आप देखो ये प्रोफेज कौन सा है जहां पे न्यूक्लियोलस भी है और क्रोमोसोम्स लूजली पैक्ड है. यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप आपके पास चला गया है, लेकिन डार्क रीजन क्यों है, बिकॉज क्रोमैटिड्स फॉर्म हो गए हैं. गॉट इट. इज इट क्लियर ना. वो तो प्रोफेज के एंड पे नहीं हो जाते.
तो यही हुई है ना, इंटरमीडिएट बिटवीन प्रोफेज एंड मेटाफेज। ओके। समझ आई? व्हाट इज योर सीरीज? पी मैट। ठीक है, पी मैट है ना सीक्वेंस। अब पी मैट है, अर्ली पी में क्या हो रहा है? ठीक है, अगर मैं सिर्फ पी वाले रीजन की बात करूं, दिस इज अर्ली पी। फिर पी और एम के दरमियान, ठीक है, लेट प्रोफेज जो आपने कहा, उसमें क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स लूजली पैक्ड थे, दे आर नाउ बिकमिंग डार्क। डार्क क्यों? क्योंकि वो हीट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में आ रहे हैं। द क्रोमोसोम्स विच आर लूजली पैक्ड, वो पहले नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन नजर क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो एक एनवेलप ने उनको बंद रखा हुआ था। अभी एनवेलप हट गया, ठीक है, पहले एनवेलप था, अभी एनवेलप हट गया, बट दे themselves have become very dark. Got it? या। Good. उसके बाद मेटाफेज के अंदर पहली निशानी है कि वो इक्वेटर के ऊपर लाइन अप हो चुके हैं। एनाफेज की निशानी है कि एक आधे यहाँ जा रहे हैं, एक आधे आपस यहाँ जा रहे हैं। एनाफेज, लेट एनाफेज के अंदर जरा डिस्टेंस इन दोनों में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ द पोल्स नाउ। और टीलोफेज के अंदर यू कैन सी अनदर membrane being formed lightly as well. Up centrosomes, centrioles, and centromeres. Can you tell me the difference in all these three terms? सेंट्रोसोम तो जो न्यूक्लियस के एंड पे दो होते हैं सेंट्रोसोम, फिर वो सेंट्रियोल तो डिवीजन में हेल्प करते हैं। और Yep, सेंट्रोमेर तो वो होता है जो दो क्रोमैटिड को होल्ड करता है। yep. Good हो गया। Centrosomes are located at the poles of the spindle at each fiber. आपको पता है ये जो centrosome होता है, that is made up of two centrioles basically. Got it? ओके। ठीक है, ये जो रीजन होता है ना, ये बेसिकली सेंट्रोसोम होता है, विच इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स। एक सेंट्रियोल सीधा खड़ा हुआ है, एक लेटा हुआ है। ये सेंट्रोसोम है, विच इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल, और इन सेंट्रियोल में से फिर क्या निकलती है? स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली। The spindle gets its name from the fact that it is similar in shape to some spindles used in spinning. Sleeping Beauty pricked her finger on a spindle, और इतनी पतली चीज है, just imagine. In chapter 1, the centrosome is an organelle found in animal cells that act as a microtubule organization center, because this is the one where the spindle fibers originate. और इसको माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये सिंथेसाइज करती हैं स्पिंडल फाइबर्स। हाउ आर स्पिंडल फाइबर सिंथेसाइज्ड? फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स में। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं, कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं तो एक स्पिंडल फाइबर बनती है? 13। गुड, 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं तो एक स्पिंडल फाइबर बनती है। और ये सारा कहाँ हो रहा है? सेंट्रोसोम में। इसलिए सेंट्रोसोम का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, बिकॉज द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू spindle fibers. They are responsible for making the spindle, which is made up of microtubules, and the spindle is needed for separation of the chromatids. Each centrosome consists of a pair of centrioles surrounded by a large number of proteins, and it is these proteins that actually control the production of microtubules, not the centrioles. प्लांट माइटोसिस सेंट्रोसोम के बगैर होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोमेयर इन द साइट ऑफ अटैचमेंट, जो सेंट्रोमेयर होता है वो क्या रीजन है? जैसे आपने बताया, इट इज द पॉइंट विच होल्ड्स द टू क्रोमैटिड्स टुगेदर। एक ये क्रोमैटिड, एक ये दूसरा क्रोमैटिड, इनको जिसने जोड़ के रखा हुआ है ना टू मेक वन कंप्लीट क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज अ सेंट्रोमेयर। और स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच होते हैं? इन सेंट्रोमेयर्स के साथ ना एक हुक सा लगा होता है, दैट हुक इज नोन एज काइनेटोकोर, जहां पे आपके पास, which is a protein structure found at the centromere of a chromatid, to which the microtubules attach during the nuclear division, and then they are pulled towards the opposite poles. These kinetochores are made up of protein molecules which connect the centromere to the spindle microtubules. Bundles of microtubules called spindle fibers extend from the kinetochores to the poles of spindle during mitosis, and the construction of kinetochores begin before nuclear division starts during the S phase of the cell cycle, and they are lost again afterwards. The microtubules attached to the kinetochore pull the kinetochore towards the pole of the spindle, and the rest of the chromatid drags behind, giving the characteristic of anaphase. ये जो पुलिंग एक्शन होता है, ये पुल कैसे होती है? ये एक्चुअली इनकी लेंथ छोटी होती जाती है। जब स्पिंडल फाइबर निकली थी उनकी लेंथ लंबी हुई थी, ठीक है, दे कॉन्ट्रैक्टेड। जब इन्होंने एक काइनेटोकोर को पकड़ लिया, एक सेंट्रोमेयर पकड़ लिया, अब इन्होंने जब वापस आना तो इनकी अपनी लेंथ वापस से छोटी होगी, दे आर गोइंग टू रिलैक्स। when they are going to relax, these spindle fibers are going to shorten again, इनकी लेंथ आपके पास कम हो जाएगी, and they are going to be pulled towards the opposite poles, both from the pole end and from the kinetochore end. Is it clear?
Yep. Good job. So can you tell me what is the function of centrosome? Centrosome spindle fiber formation. Yes. Okay. And what is the function of spindle fibers? Spindle fibers pull or attach Check. chromosomes. Good. Good. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and any. Hey, it's Professor Dave. I want to tell you about mitosis. So we know about the cell cycle, which means we understand that cells copy the genome and grow in preparation for cell division. The actual process of cell division, which is called mitosis, is happening all over your body right now. And it's quite complex, so let's take a look at how this works. Mitosis is divided into 5 phases. There's the prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, and telophase. At the completion of telophase, there is also cytokinesis. Once all this is finished, we end up with 2 identical cells, each with all the genetic information pertaining to that organism. But let's start at the beginning and learn what happens in each phase. Before mitosis begins, when the cell is still in the G2 phase of the cell cycle, we have 2 copies of all the chromosomes sitting in the nucleus, but they are loose and strewn about. In addition, the centrosome of the cell, which, as we recall, contains 2 centrioles, has duplicated, so there are 2 pairs of centrioles. Then, as mitosis begins, during the prophase, the chromatin becomes tightly coiled and forms the shape we are familiar with for chromosomes, with sister chromatids linked by a centromere. It is also in the prophase that something called the mitotic spindle begins to form. This is made up of the 2 centrosomes and a number of microtubules that begin to form between them. Each centrosome also has a radial array of microtubules surrounding it, called an aster. As the cytoskeleton disassembles, the microtubules between the centrosomes grow and grow, which pushes them apart. Then, in the prometaphase, the nucleus breaks apart, and the growing microtubules cover the area where the nucleus used to be, so that they can attach to special proteins called kinetochores, which have assembled on the chromosomes at their centromeres. Things are starting to get organized as a kind of tug-of-war plays out. Then, in the metaphase, the centrosomes have settled at the poles of the cell, with the asters attaching to the plasma membrane, and all of the chromosomes have been arranged nicely along a plane in the middle of the cell. This imaginary plane is called the metaphase plate. At this stage, there is a checkpoint to ensure that each pair of sister chromatids is firmly attached to opposite ends of the mitotic spindle. Once all the kinetochores are attached to the spindle and everything is lined up nicely, a regulatory protein complex becomes activated, allowing the cell to pass through the M checkpoint, which means we are ready for the anaphase. In this phase, the shortest of all the phases, the enzyme separase cleaves the cohesins that keep the sister chromatids together, and the kinetochores attached to the 2 sister chromatids pull the chromatids apart on each chromosome, thus generating the 2 separate sets of the genome. These chromosomes are then pulled by motor proteins that attach to the kinetochores, which reel them in by their centromeres to opposite ends of the cell, with the microtubules they are attached to coming apart as they go.
The cell also elongates during this phase until the two sets of chromosomes are far apart. Then, in the telophase, two new nuclei form, rebuilt from the fragments of the original nucleus that came apart in the prometaphase. The chromosomes loosen up a little, the microtubules finish coming apart, and mitosis is complete, with two genetically identical nuclei. To finish things up, cytokinesis will occur, which is where the cytoplasm, which has already begun dividing the cell into two smaller ones, will continue until the cells are distinct and separate. This starts with a cleavage furrow at the metaphase plate, caused by actin microfilaments that pull the cell inwards like a drawstring, which eventually pinches the cell in two. Your body is constantly producing new cells by mitosis to make new skin, heal a wound, or when you grow rapidly in childhood. Every single somatic cell in your body was produced by mitosis, except the very first one. This first cell is an egg cell that has been fertilized by a sperm cell, and these reproductive cells, or gametes, are produced by a different process. So let's learn about that next. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. All right, are the all stages clear? Yes. All right. Now let's talk about the importance of mitosis. What do you think? What are the functions of mitosis? Why does it happen in the body? Growth, repair, Good, good. Growth of cells, repair, and growth of division. बिल्कुल division, cell division करना, worn out cells को replace करना है. Now we know the two daughter cells formed after mitosis. You should know one thing about mitosis जो मैंने day 1 बताई थी. Exact photocopies are produced. Exact photocopies are produced. जो daughter cells produce ये identical है. Daughter parent से भी identical है. Parent daughter से हर बंदा identical है. Whichever being produced by mitosis, every cell. They're all genetically identical. They're clones, photocopies. This allows the growth of multicellular organisms from unicellular zygotes, and growth may occur over the entire body as in animals or be confined to certain regions as in the meristems of growing points of plants as well. Secondly, replacement of damaged or dead cells and repair of tissues by replacement is also one of the functions of mitosis. बहुत से cells जो हैं वो damage हो जाते हैं. They need to be repaired. उनको replace करना होता है. Worn out हो जाते हैं. There can be your skin cells, your muscle cells, cardiac cells, आपके stem cells, आपके red blood cells, lymphocytes. These are all the cells that have to be because they are all constantly dying. They are used up, they die, they have to be replaced by the identical cells. And in the human body, for example, cell replacement is particularly rapid in the skin and in the lining of the gut. Some animals are able to regenerate whole parts of the body. For example, starfish can also regenerate new arms. Asexual reproduction or sexual male, what is the difference? Can you tell me? Or how do you define asexual? Where no gametes are involved when exact copies are formed. Exactly. Parent single. It's a single parent. No two gametes are involved क्योंकि gametes की game ही नहीं बन रही है कि mitosis is the basis of asexual reproduction and the production of a new individual of a species by a single parent organism. The offspring are genetically identical to the parents, and asexual reproduction can take many forms, which is the production of new individual of a species by a single parent organism. For a unicellular organism such as amoeba, cell division inevitably results in reproduction, and for multicellular organisms, new individuals may be produced which bud off from the parent in various phases. Budding is very common in plants, which you'll study in your A2 as well, that what is budding. It is one of the most common form of vegetative propagation. Vegetative propagation क्या है और ये budding क्या है? ये budding is a part of vegetative propagation and they are both part of the asexual reproduction in plants. जहाँ पे एक पार्ट स्टेम का ना एक नए प्लांट में तब्दील हो जाता है, वो डिटैच होता है पहले, द स्टेम डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, बड्स ऑफ कहीं और ग्रो करके इट ग्रोज इनटू अ न्यू बल्ब, एक शूट में डेवलप होके एक पूरा प्लांटलेट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है.
These techniques are also being used in biotechnology as well, in genetic engineering, and it is also the basis of cloning as well. इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर भी माइटोसिस हैव अ वेरी गुड रोल। वाई कि जैसी लेट्स से एक एंटीजन आया या पैथोजन आ गया कोविड 19 का, ठीक है, कोविड 19 इज अ पैथोजन, ठीक है, एंड बीइंग अ फॉरेन बॉडी आई कैन ऑल्सो कॉल इट एन एंटीजन, ठीक है। अब ये एंटीजन आया, एंटीजन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स थे, ठीक है, इसकी कुछ स्पेसिफिक साइट्स थी, और हमारे जो लिम्फोसाइट्स थे दे हैड द रिसेप्टर्स जिन्होंने डिटेक्ट कर लिया इस एंटीजन को कि फॉरेन बॉडी है। इन लिम्फोसाइट्स ने जब आगे सिग्नल देना होगा, ठीक है, जैसे सिग्नल दे दिया फॉर एग्जांपल बी लिम्फोसाइट्स को, अब बी लिम्फोसाइट्स हैव टू डिवाइड रैपिडली बिकॉज दे हैव टू प्रोड्यूस व्हाट, एंटीबॉडीज, उन्हें ढेर सारी एंटीबॉडीज बनानी है। नाउ दीज बी lymphocytes आर also divided rapidly into B plasma cells and B memory cells by the help of माइटोसिस। ये हम चैप्टर 11 इम्यून सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। मैंने डिटेल इसलिए बता दी थोड़ी सी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर नंबर 11 एज वेल। इज इट क्लियर? Yeah. इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हमने जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट द एजेस ऑफ क्रोमोसोम व्हिच वर नोन एज व्हाट, द टीलोमेयर्स, ये जो एजेस थे। अब हम इनका फंक्शन पढ़ेंगे, जो It एंडिंग। cause aging. एंड व्हाट एल्स डू यू नो अबाउट टीलोमेयर्स? Allows correct replication of replication and checking. एग्जैक्टली, ठीक है, ये एक दफा पूरा चेक करता है कि सारा जीन का कोड सही है, ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स सही तरह जॉइंड है या नहीं। एंड यू हैव सीन दैट द डीएनए इज replicated during the S phase of the cell cycle. The copying enzyme cannot run to the end of a strand of DNA and complete the replication because it stops a little short of the end. ये हम चैप्टर 6 के अंदर भी देखेंगे। It is possible to understand the reason for this without a detailed knowledge of replication. If part of a DNA is not copied, वो information lost हो जाएगी, क्योंकि पूरा DNA क्या है, जीन्स 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 जीन्स, जीन ही जीन है ना डीएनए के ऊपर। अगर कोई चीज आधे रास्ते रुक जाती है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो कोई जीन था वो इन्फॉर्मेशन जो भी कैरी कर रहा था, वेदर दैट्स अबाउट योर आई कलर, हाइट, वेट, स्किन कलर, वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉस्ट हो गई है। ऐसे ही जब और डिवीजन होते जाएंगे, अनदर स्मॉल सेक्शन ऑफ द डीएनए वुड बी लॉस्ट। लेट्स जस्ट एग्जांपल में देता हूँ कि अगर आपके पास एक रोड है, ठीक है, आप एक रोड के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, या आप एक चीज के ऊपर, ठीक है, आप एक रोड के ऊपर जा रहे हो और आगे खाई है, ठीक है, आप कहाँ जाके ब्रेक लगा दोगे, एग्जैक्टली विच पॉइंट पे, पॉइंट ए के ऊपर ब्रेक लगाओगे या पॉइंट बी तक जाओगे? A. ए पे आप ब्रेक लगा दो क्योंकि आपको पता है आगे रोड खत्म हो रही है। तो इस हिस्से का क्या कसूर है, यहाँ पे क्या पता एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हो। इसी तरह जब चैप्टर 6 के अंदर आपका कौन सा एंजाइम होता है दैट इज रीडिंग द बेस पेयर, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो भी तो एक तरह से चेक करने आता है ना, एक पुलिस है, वो जोड़ता हुआ आ रहा होता है ना सबको सबको सबको, लेकिन उसको नजर आता है भाई आगे क्रोमोसोम खत्म हो रहा है, जल्दी से यहाँ पे रुक जाओ। अब यहाँ वाले इस हिस्से का क्या कसूर, क्योंकि उसको भी यही डर था कि आगे जाके मैं खत्म हो रही, खाई आ रही है, वो रुक गया। अब यहाँ पे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन भी तो हो सकती थी, कोई खजाना था यहाँ पे, तो अब वो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम उसी रोड को ऐसे ही रखते हैं, बट यहाँ पे एक बैरिकेड लगा देते हैं, और अब आगे ऑब्वियसली खाई है। तो अब आप एग्जैक्टली बेशक पॉइंट ए भी रोको, आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब मान लो कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे एक टीलोमेर ही है। समझ आ गई? Yes. अब कुछ चांस नहीं कि वहां पे कुछ लॉस्ट हो, ठीक है, आपके जहन में नहीं रहेगा कि यार मेरे से कुछ मिस हो गया, क्योंकि आप ये सोचो कि यार वहां तो वैसे ही ब्लॉक था, बैरिकेड लगा हुआ था। दैट बैरिकेड इज एक्चुअली द टीलोमेयर। The main function of telomeres is to ensure that the ends of the molecule are included in replication and not left out when DNA is replicated. Telomeres are found at the end of the chromosomes, and they have been compared with the plastic tips at the end of the shoelaces as well. They are made up of DNA with short base sequences that are already repeated many times. They work by making the DNA a bit longer, and उनके पास कोई they have no useful information, but they allow the copying of the enzyme to complete. वो ये इंश्योर करते हैं कि पूरा उसने पढ़ लिया है, ठीक है। जब डीएनए पॉलीमरेज ये एक चीज इंश्योर हो जाएगी, जब पढ़ा होगा एकदम से, जब वो टीलोमेर को पढ़ेगा, कहते हैं यार इस पे तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, वहां से फिर वो वापस आएगा, लेकिन एटलीस्ट देखो वो एंड तक गया तो है। As long as extra bases are added to the telomere during each cell cycle to replace those that are not copied,
No vital information will be lost from non-telomere DNA, and the cell will be able to continue dividing successfully. And the enzyme that performs the role of adding bases to telomeres को हम कहते हैं telomerase. ये यहाँ पे ना एक फालतू की बेसिस नहीं होती, वो ऐड करता जाता है कि यार डीएनए पॉलीमरेज आएगा, इसको पढ़ेगा, तब के वापस चला जाएगा, अब दोबारा यहाँ पे कुछ और आके फजूल सा ऐड कर दो, फिर अगली बार डीएनए पॉलीमरेज आएगा, इसको पढ़ेगा, तब के चला जाएगा, किसमें तो कुछ था ही नहीं। तो वो ना जो फजूल की बेसिस होती है ना, वो ऐड करते जाते हैं, कौन? telomerase ऐड करता जाता है। The function of telomerase is therefore to prevent the loss of gene during cell division and allow continued replication of the cell. अब आप उस रोड पे जब जाओगे, आप देखोगे यार यहाँ भी कुछ है, तो मैं थोड़ा और आगे तक जाता हूँ। एटलीस्ट आप आगे तक तो गए ना, यही सोच के कि आगे कुछ होगा। आपने देखा कि यार आगे टीलोमेर भी है, क्या पता यहाँ कुछ हो, लेकिन होता वहां पे कुछ भी नहीं है, फजूल चीज ही होती है। तो अच्छी बात ये कि आपने अच्छी वाली सारी इंफॉर्मेशन यहाँ तक आ तो गए ना, इसी बहाने आप यहाँ तक आ गए। Some cells do not top up their telomeres at each cell division, and these tend to be fully differentiated. With each division, their telomeres get a little shorter until the vital DNA is no longer protected and the cell dies. This could be one of the mechanisms of aging. So, can you explain me what is the relationship between telomeres, presence of telomeres, and aging? Telomere shorten with time, that's why it causes aging and yeah. क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स कम होने लग जाती है। आपकी एजिंग क्यों होती है? कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक वीक हो जाती है, आईसाइट की ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक भी वीक हो कम हो जाती है, जाती है। ग्रोथ कम हो जाती है। आपके जब कोई फुली चीज रेप्लिकेट ही नहीं हो रही कोई चीज, तो आपका आगे सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ये पूरे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारे खराब होंगे। आपका डीएनए सही तरह रेप्लिकेट नहीं हुआ, डीएनए सही रेप्लिकेट नहीं हुआ, ऑर्गेनेल्स नहीं बनेंगे, ऑर्गेनेल्स नहीं तो सेल्स नहीं, सेल्स मिलके आपको टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन, तो सारी सीरीज खराब होती है। तो साइंटिस्ट और आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग और मैनी मैनी टेस्ट और एक दो फिल्में भी बन चुकी हैं, पता नहीं क्यों, कि इफ यू समहाउ प्रिवेंट द लॉस ऑफ टीलोमेर्स, साइंटिस्ट शायद आने वाले वक्तों में एजिंग भी खत्म कर सके और ये ग्रोइंग ओल्ड वाला सीन ही खत्म हो जाए। सो अगेन अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग हैज बीन डन ऑन दिस एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन एज वेल। व्हाट आर स्टेम सेल्स? Which specialized in forms किसी भी फॉर्म में स्टेम सेल बस बैकअप पे सेल पड़े हैं बॉडी में। आपके इंसुलिन के सेल्स खत्म हो गए, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल, स्टेम सेल्स उसमें बदल जाएंगे। आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, स्टेम सेल्स रेड ब्लड सेल्स बन जाएंगे। तो ये बैकअप पे ना एक पड़े होते हैं, कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं। दे कैन डिवाइड इनटू एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेनी टाइम्स बाय माइटोसिस, एंड व्हेन इट डिवाइड्स ईच न्यू सेल हैज द पोटेंशियल टू रिमेन अ स्टेम सेल और टू डेवलप इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल सच एज अ ब्लड सेल और अ मसल सेल। The power of a stem cell to produce different types of cell is variable and is referred to as its potency, कि वो कितनी टाइप्स में बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टेम सेल्स कैन प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ सेल, उनको हम टोटिपोटेंट कहते हैं, ये पहली टाइप है। जैसे कि जाइगोट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन एग गेट फर्टिलाइज्ड इज टोटिपोटेंट। और जो आगे 16 सेल्स डेवलपमेंट तक जो 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 सेल बन रहा है ना, अंटिल अ बेबी ग्रोज, वो सारा एक ही बंदा कर रहा है, एक ही स्टेम सेल कर रहा है, एंड दैट इज टोटिपोटेंट। किसी भी सेल में तब्दील हो सकता है। After death, some cells become specialized to form placenta, while others lose this ability but can form all the cells that will lead to the development of embryo and later the adult. फिर जो embryonic stem cells होते हैं उनको हम pluripotent कहते हैं। As tissues, organs and systems develop, cells ज़्यादा specialize होते जाते हैं, and this time your body has 200 different types of cells. The more committed cells become to particular roles, the more they lose the ability to divide. Until in adult, most cells do not divide. लेकिन ग्रोथ और रिपेयर के लिए एसेंशियल है दैट स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स हमेशा रिमेन करें बॉडी में, ताकि दे कैन प्रोड्यूस न्यू न्यू टाइप्स। एडल्ट सेल्स भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोटेंसी लूज कर जाते हैं, दे आर ओनली एबल टू प्रोड्यूस अ फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स, बट सम कैन रेप्लिकेट मैनी नंबर ऑफ टाइम्स एज वेल। जैसे मेच्योर ब्लड सेल्स जो हैं वो उनका शॉर्ट स्पैन होता है, लेकिन फिर आपके पास कुछ वाइट ब्लड सेल्स जिनका लॉन्ग स्पैन भी होगा। स्टेम सेल्स आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे स्टेम सेल थेरेपी भी आती है, उसमें क्या होता है, जिन लोगों को मसले होते हैं उनका बोन मैरो आप पूरा रिप्लेस करते हो। स्टेम सेल थेरेपी ने रिसर्च में इतनी डेवलप हुई है जो कि पूरा पूरा लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, लेकिन अगेन इसके ऊपर भी बहुत सी अभी तक रिसर्च होती जा रही है। लोग डायबिटीज के लिए जिनको इश्यू होते हैं, डायबिटीज के लिए इंसुलिन चाहिए होता है, और इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बाय द पैंक्रियाटिक सेल्स। अब जिस बंदे के पास वो कम है उनको भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, क्योंकि उनके स्टेम सेल्स बना ही नहीं रहे हैं ये डिफरेंट इंसुलिन वाले सेल्स।
कैंसर्स क्या होते हैं? कैंसर स्टार्ट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन। ग्लोबली आपको पता है इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। अब ये होता कैसे है? कैंसर्स होते हैं व्हेन देयर इज एन अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन। क्योंकि अनकंट्रोल सेल डिवीजन जब किसी सेल की होने लग जाए, उनको हम कैंसर सेल्स कहते हैं, जो ट्यूमर बना देते हैं। और ट्यूमर भी आपके पास दो किस्म के बनते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होता है और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बिनाइन ट्यूमर कौन से होते हैं? बिनाइन ट्यूमर वो होते हैं जो एक ही जगह पे ढेर सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन बॉडी में स्प्रेड आउट नहीं होते, उनको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। लेकिन फिर एक आते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट वो होते हैं जो बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं। और ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुई क्यों थी? ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन ने आके एक जीन को बदल दिया था ऑन्कोजीन में। ऑन्कोजीन वो जीन होती है जो कि म्यूटेट हो चुकी है। उस एक जीन की वजह से एक पूरा सीक्वेंस चेंज हुआ, अनयूजुअल इवेंट्स हुए। इसने आपसे स्टिमुलस लेना बंद कर दिए, इसने ब्रेन की बातें मानना बंद कर दी, उसने रिस्पॉन्सेज देना बंद कर दिए, उसने बॉडी का इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। और म्यूटेशन का ओवरऑल कोई ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, बट जो कैंसर सेल्स आगे खुद ही से खुद ही माइटोसिस जो अनकंट्रोल होने लग जाता है, उसकी वजह से इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एनी एजेंट हो सकता है, वो एस्बेस्टोसिस भी हो सकते हैं, किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कार्सिनोजन एजेंट्स होते हैं दैट एक्चुअली कॉज दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, तो उनको हम ये कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स मैंने जैसे बता दिया, और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर क्या फर्क होता है, हाउ दे कैन ब्रेक ऑफ एंड स्प्रेड थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम और सेकेंडरी ग्रोथ। तो दिस होल डायग्राम एक्सप्लेन्स दैट ऑल, कि कार्सिनोजेंस कैसे आते हैं, कैंसर सेल कैसे बनता है जब ऑन्कोजीन बन जाती है, सुनना बंद कर देता है, माइटोसिस होता है, ट्यूमर बड़ा होता है, बिनाइन है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेलिग्नेंट हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम में बना, लिम्फेटिक सिस्टम में फैल गया तो ब्लड तो वैसी शुगर में बॉडी में फैलता रहता है, तो ब्लड के साथ साथ वो फैल जाता है। और मेटास्टेसिस उसको कहते हैं, मेटास्टेसिस द प्रोसेस व्हेन ट्यूमर इज एक्चुअली स्प्रेडिंग थ्रू आउट द बॉडी। एंड दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर, माइटोटिक सेल। यूवी लाइट कैसे कार्सिनोजन होती है? यस।